क्या हम ये सोचते हैं कि यार एमबीए कनाडा में करने से हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे बेटर है कि हम इंडिया में ही करें? अगर आप भी उन बच्चों में से हैं या उन पेरेंट्स में से हैं जो सोचते हैं कि डूइंग एमबीए इन इंडिया इज चीपर दैन इन कनाडा, लेट मी टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर. Because doing MBA from a top tier Indian institute will cost you more than what it will cost you in Canada. Hi guys, so आज की वीडियो में we'll talk about MBA. MBA is a very popular program among all sorts of students, whether you're from engineering background or you're from a commerce background or even from arts background. MBA is the most sought after degree which helps us to get our dream job. So let's talk about doing MBA in India versus doing MBA from Canada. We all know that MBA in India is very competitive if you want to do MBA from a good school. If you want to do MBA from a top tier school in India, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम IIM अहमदाबाद या IIM किसी भी IIM से हम MBA करना चाहते हैं या IIM के अलावा किसी टॉप टियर इंडियन MBA स्कूल से ISB से हम MBA करना चाहते हैं, you know it's very competitive. जो कैट का एग्जाम आपको देना पड़ता है, सिर्फ टॉप परसेंटाइल के बच्चों को ही सिलेक्शन मिलती है या कॉल आती है एमबीए के लिए. एंड अगर आपको कॉल आ भी गई, दैट डजंट मीन दैट यू आर सिलेक्टेड इन आईएम और एनी अदर टॉप इंस्टीट्यूट. इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉल यू हैव टू गो थ्रू रिगरस इंटरव्यू प्रोसेस. व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट द पर्पस ऑफ एमबीए इज टू प्रिपेयर यू फॉर ऑल दिस. आप एमबीए की एडमिशन में ही एक बच्चे को इतना कुछ फेस करवा रहे हो, वो तो ऑब्वियसली जिस बच्चे को जनरली एमबीए की जरूरत है वो एक अच्छे स्कूल में जा ही नहीं पाएगा. एंड जिस बच्चे की एडमिशन एक टॉप टियर एमबीए स्कूल में हो चुकी है आफ्टर गोइंग थ्रू रिगरस एडमिशन प्रोसेस, दैट स्टूडेंट इटसेल्फ उसको वैसे ज्यादा एमबीए की जरूरत ही नहीं है. मैं अगर सही बात बताऊं आपको, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है. अगर वो एक इंडियन एमबीए इंस्टीट्यूट के आईआईएम्स की एडमिशन क्लियर कर देता है, दैट स्टूडेंट इटसेल्फ इज वेरी केपेबल. सो बात करते हैं एडमिशंस की इंडियन MBA programs में. The admission process is very competitive, guys. We all know that admission requirements for any top school in India, top MBA school in India, the cutoff is very high, 98 percentile, 99 percentile, कई तो 99.99 percentile भी required करते हैं. And even if you make the cutoff, still there is no guarantee that you'll get into the top tier school. You have to go through a rigorous interview process, right? After clearing the rigorous interview process, you might be amongst the very few cream students who gets into this school. But majority of the students are not able to get into these top tier schools. So this is the admission process for doing MBA from a top tier Indian school. But what about getting admission in a top tier Canadian schools? The admission process is still competitive. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत easily admission हो जाएगी. It is competitive, but not as competitive as what you see in India. You need a GMAT exam. And you can also get a waiver for GMAT exam if you have relevant work experience. So it's relatively easier to get into a MBA in Canada as compared to getting into a good MBA school in India. So if it's easier to get into a good MBA school in Canada, why do we still choose a top tier MBAs in India? अगर आप भी उन बच्चों में से हैं या उन पेरेंट्स में से हैं जो सोचते हैं कि doing MBA in India is cheaper than in Canada, let me tell you, you're absolutely wrong here. Because doing MBA from a top tier Indian institute will cost you more than what it will cost you in Canada. अगर मैं IIMs की MBA की बात करूँ, it goes up to 25 to 30 lakhs. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं इंडिया में जिनकी MBA की कॉस्ट goes up to 50 lakhs. एंड अगर मैं एक सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की बात करूँ जिसकी कोई खास रैंकिंग नहीं है, जिसकी MBA का आपको कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होएगा, उसकी भी कॉस्ट anywhere between 5 to 10 lakhs है. So the cost of doing MBA in India versus cost of doing MBA in Canada, there is not a huge difference. In fact, in some cases, the cost of doing MBA in Canada will be lesser than what you'll be paying in India. So you see, you weigh yourself, India, Canada. Now you're paying the same amount for MBA in India as well as in Canada. You're paying the same amount. So why not do your MBA in Canada, where the cost of doing MBA is same as compared to India, and उसके अलावा cost भी same है and आपको एक international exposure मिलेगा. You get international exposure, you will meet people from all walks of life, you will meet students from all over the world, and that international exposure will really help you to become the best version of yourself. So अगर cost same है guys, इंडिया में MBA की cost same है, इंडिया और कनाडा में MBA की cost का ज़्यादा फर्क नहीं है, तो फिर आप कनाडा के options देखो. Alright, so अब बात करते हैं cost of doing MBA in India. Do you know that इंडिया में अगर हम किसी टॉप IIM इंस्टीट्यूट की बात करें, टॉप MBA इंस्टीट्यूट की बात करें, IIMs की बात करें
या कुछ और इंस्टीट्यूट्स की बात करें जो टॉप टियर रैंक्ड हैं, इनकी कॉस्ट गोज एनीवेयर बिटवीन 25 lakhs to 50 lakhs. While at the same price tag, you can do an MBA in Canada at even a better ranked school. So here's the price difference. जो आपको लगता था कि कनाडा में MBA बहुत कॉस्टली होगी, ऐसा नहीं है. The price point does not vary a lot, and in fact, we have some options for you where you can do the MBA at half the cost what you will be doing it in India. At half the cost, guys, and that too in Canada. Alright, so price point हमें clear है कि price point का ज़्यादा फर्क नहीं है. तो फिर let's talk about rankings. क्या ये rankings हैं ऐसी? क्या Indian MBA programs better ranked है Canada के MBA programs से? Then again we are wrong. अगर मैं ranking की बात भी करूँ, तो क्या आपको पता है IIM Ahmedabad is ranked 60 in the world for its MBA program, while Rotman School of Management by University of Toronto is ranked 39th. That's just one example. If you start comparing Indian MBA programs to the MBA programs in Canada, you will see the huge difference. Majority of the Canadian MBA programs are ranked better than what their counterparts in India. So Canadian programs की ranking भी better है. आपको GMAT नहीं देने की जरूरत अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है. आपकी कोई एक्सटेंसिव राउंड्स ऑफ इंटरव्यू नहीं होंगे, कोई पीयर ग्रुप डिस्कशंस नहीं होंगी, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपको. सी बट हियर यू कैन फिगर आउट योरसेल्फ व्हिच एमबीए प्रोग्राम मेक्स मोर सेंस फॉर यू. तो अभी हमने बात करी अपनी कॉस्ट की. नेक्स्ट बात करते हैं. देखो, व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग अब्रॉड, नाउ एमबीए इज अ प्रोफेशनल डिग्री, राइट? देयर इज नो डाउट इन दैट. सो वी शुड नो दैट व्हाट विल वी गेट आफ्टर डूइंग द एमबीए. ऐसा तो नहीं है कि हमने एमबीए कर ली, हमारा कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है. वी नीड टू लुक एट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो आप पैसे लगा रहे हो अपनी पढ़ाई में, आपको वो पैसे कितने साल बाद आप वो पैसे रिकवर करोगे, या वो पैसे आप जो अपनी पढ़ाई में लगा रहे हो उस पैसों का आपको क्या फायदा हो रहा है. While the average salary of graduates who do MBA from Canada is 50-55 lakhs. That's the average starting salary. Cost सेम है बट सैलरी डबल मिल रही है आपको कनाडा में. एंड आप लाइफस्टाइल एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको कनाडा में मिल रही है, I don't need to elaborate on that. Right? So return on investment also, point of view wise also, you have much better options in Canada, right? Your average salary will be much better than what you will be getting in India. But then again, remember this is the average salary, not for everyone. अगली बात करते हैं MBA के बारे में, जो कि है स्पेशलाइजेशन. वो टाइम क्या बस जब हम MBA सिर्फ एक जनरल MBA आप करते थे, या फाइनेंस में करते थे, HR में करते थे, या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में करते थे, जनरल MBA ही करते थे. आज के टाइम में there are so many specialization available in MBAs. Even in India, you choose your specialization as your electives. Mostly in all MBA programs in India, in your second year, you choose your specialization by selecting the required electives. But क्या आपको पता है कि आपकी जो electives हैं आपने अपने second year में choose करे हैं, majority of the Indian schools will not mention those specializations in your degree. जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपको जनरल MBA की ही मिलेगी. आपके ट्रांसक्रिप्ट्स में जरूर दिया होगा कि आपने ये मॉड्यूल्स करे. You will not get a degree for a specialized MBA. While in Canada, you will get a degree for a specialized MBA. For whichever specialization you do. For example, you plan to do MBA in artificial intelligence and machine learning. Yes, there is an MBA in artificial intelligence and machine learning. अगर आपको ये पता नहीं है. So if you are doing a specialization MBA in artificial intelligence and machine learning, your degree, your final transcript will show that you have done an MBA in artificial intelligence and machine learning. Or for the matter of fact, it can be in supply chain or management. Or business analytics. There are so many specializations available in Canada कि you will have whichever background you are from, आपको अपने लिए कोई ना कोई option जरूर मिलेगा. Right? So guys, I hope you've liked this video. Please do like it and subscribe our channel. It really encourages me to make more interesting and informative videos for all of you. And like always, we are here to give you the right guidance for pursuing your overseas education dream. If you are planning to do MBA from Canada, reach out to me and my team. We are here to help you and make your Canadian education dream a reality. Thank you.